Now the clinical features. Basically, clinical features depend upon the size of the tumor. So there are various phases of the enlargement of the eighth nerve. So first stage, that is the early autologic phase and also known as the cochleovestibular phase. तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगी? तो द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स इन फर्स्ट स्टेज इज यूनिलेटरल टिनेटस, एक तरफ का आपका टिनाइटस होगा. दैट इज द अर्लीस्ट सिम्टम, याद रखिएगा, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ एकॉस्टिक न्यूरोमा इज द यूनिलेटरल टिनाइटस इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. दैट विल बी ऑफ नॉन पल्सेटाइल नेचर एंड हाई पिच्ड. Then second most common feature is the unilateral hearing loss. That will be gradual. It takes time. It may vary between the 2 to 20 years, and there is a slow progression in the unilateral hearing loss. So these two things, the unilateral tinnitus and unilateral hearing loss, are the two most common features. Then third, in about 10% of cases of acoustic pneumonia, the hearing loss can be of the sudden onset, means sudden profound SNHL हो सकता है. And the fourth feature is that there might be a slight imbalance or lightheadedness or the rotatory vertigo. But the imbalance or the vertigo is usually not so severe, because it is usually gradual, and the central compensation comes in between and takes the role, and compensates the vestibular decompensation. Basically आप जो हायर सेंटर है वो आपका बीच में आ जाते हैं और वो अडेप्ट कर लेते हैं. So this is the first stage. The next features of the first stage is there will be a facial weakness or facial paresis. Then there is a particular sign that is known as the Hirschberger sign. As you know, the posterior superior part of the external auditory canal is supplied by the facial nerve. So if it is compressed by the acoustic pneumoma, then there is a numbness in the posterior superior part of the EAC. So this particular numbness of the posterior superior part of the EAC is known as the Hirschberger sign, that is seen in the acoustic neuroma due to the compression of the seventh nerve. Okay, then there will be discomfort or the pain in or around the ear. Basically this is due to the stretching of the posterior cranial fossa dura. Then there will be altered lacrimation in the taste sensation due to the compression of the seventh nerve. These are the features of the फर्स्ट फेज. नाउ द सेकंड, अब जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होगा तो आपका जो क्रेनियल नर्व से इन्वॉल्व करेगा. अब जो इसका सुपीरियर, द एंटीरो सुपीरियर रिलेशन जो था, दैट इज विद द फिफ्थ नर्व, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व. तो अब जैसे बड़ा होगा तो आपका फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व होगी. तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स? ऑब्वियसली द फिफ्थ नर्व का काम क्या है? आपका सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फेस. So there will be numbness of the face, then there will be paresthesia, facial pain हो सकता है, and there is decreased corneal reflex, and that is the earliest sign. तो earliest symptom क्या था आपका? tinnitus, and the earliest sign क्या है आपका? decreased corneal reflex. Basically the sensory symptoms that are affected in the acoustic neuroma are first evolved in the fifth nerve, then they develop in the seventh nerve. Now the third स्टेज इज नोन एज द ब्रेन स्टेम एंड द सेरेबेलर कंप्रेशन स्टेज. अब जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होगा तो आपको धीरे धीरे आगे जो उसके बाउंड्रीज हैं वो कंप्रेस करेगा. तो ब्रेन स्टेम है और सेरेबेलर कंप्रेशन होगा. तो उसके क्या फीचर्स होंगे? एज इट विल अफेक्ट द ब्रेन स्टेम, देन there will be weakness and numbness of arms and legs. If it is compressing the cerebellar, तो cerebellar signs आएंगे. There will be ataxia of the ipsilateral upper and lower limbs. There will be dysmetria, जिसको आप फिंगर नोज टेस्ट से आप चेक करते हैं. फिर डिसडाइडोकोकाइनेसिया होगा जिसमें अल्टरनेट प्रोनेशन या सुपिनेशन आपका मूवमेंट अफेक्ट होते हैं. Then there will be gait disturbances. Then next feature will be the intentional tremors that is seen in the cerebellar dysfunction. Or there will be nystagmus that may be of vestibular in origin or the cerebellar in origin, or Bruns nystagmus इसका नाम है. Then lower cranial nerve involvement if it is a large tumor. अब lower cranial nerve में आपका 9th 10th और 11th cranial nerve involve होती हैं, जो कि that form the inferior boundary of the enlarged tumor. अब हम एक पिक्चर देखते हैं जिससे आपको आइडिया आएगा. अब ये अगर आप पिक्चर देखें तो ये ट्यूमर है, तो इसके एंटीरो सुपीरियरली आपका फिफ्थ नर्व होती है. कंटेंट्स हैं इसके AICA,
cranial nerve 7th 8th, और जो inferior boundary है ट्यूमर की, that is bordered by the cranial nerve 9th 10th and 11th cranial nerves. Okay, so this is how the lower cranial nerves are affected when it enlarges. नाउ स्टेज फोर्थ, जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी साइंस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, सो इट विल इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सो द फीचर्स ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होंगे? देयर विल बी सीवियर हेडेक, दैट इज अ posterior or occipital in and distribution. Then there will be nausea and vomiting and papilledema. These are the features of the increased intracranial tension. And last stage, that is known as the terminal stage, there, because due to the compression of the brainstem, there will be a failure of vital centers that are present in the brainstem, and finally there will be coma and death. Now, what are the investigations that you will advise in a suspected case of acoustic neuroma? तो जाहिर सी बात है, ये 8th nerve को अफेक्ट कर रहा, सो द मोस्ट कॉमन फीचर्स इसके टेंडाइटिस हैं और यूनिलेटरल हियरिंग लॉस है. तो ऑब्वियसली ऑडियोलॉजिकल टेस्ट आप एडवाइस करेंगे. सो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज द प्योर टोन ऑडियोमेट्री, दैट विल रिवील द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यूनिलेटरल, एंड दैट विल बी मोर मार्क्ड इन द हायर फ्रीक्वेंसी. अब आप इस ऑडियोग्राम में देखिए, ये राइट का है, ये नॉर्मल है, ये लेफ्ट है क्रॉस, अभी इधर जा रहा. तो ये जो क्रॉस है ये आपका यूनिलेटरल आपका हेयरिंग लॉस दिखा रहा है, जो कि दैट इज मोर इन द हायर फ्रीक्वेंसीज. सो दिस इज अ peculiar audiogram that is showing the unilateral SNHL that can be due to the acoustic neuroma. Then there will be poor speech discrimination score, that is out of proportion to the pure tone audiometric threshold. Then third, मैंने आपको जब ऑडियोमेट्री पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जहाँ जितने भी डिके हैं that are characteristic of the retrocochlear hearing loss. तो अब दो तरीके के डिके होते हैं, एक तो टोन डिके होता है, वो पॉजिटिव होगा आपका, एंड सेकंड इज द स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डिके, वो भी इसमें प्रेजेंट होगा. ओके, सो दीज टू डिके, पॉजिटिव टोन डिके एंड द स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डिके विल बी प्रेजेंट इन द रेट्रोकोक्लियर हेयरिंग लॉस. और रेट्रोकोक्लियर हेयरिंग लॉस का एग्जाम्पल ही acoustic neuroma है. Next investigation will be obviously there is a imbalance or the vertigo, so obviously you will check the vestibular function. So vestibular testing, caloric test will show the diminished response on that side, and you will do the neurological examination because it is affecting the cranial nerves like the 5th nerve, then it is affecting the 7th nerve, then lower cranial nerves 9th 10th 11th, और 6th nerve भी affect कर सकता है, 3rd nerve भी affect कर सकता है due to increased intracranial pressure. द रेडियोलॉजिकल टेस्ट अब आप करवाएंगे तो उसमें आपका क्या होगा? HRCT टेम्पोरल बोन, यानी CT स्कैन ऑफ द टेम्पोरल बोन, एंड द टू मोस्ट स्पेसिफिक और द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन दैट आर एडवाइज्ड इन द acoustic neuroma केस, जो कि आपसे पूछा जा सकता है. यू हैव टू टेल दैट the most common or the investigation of choice is the gadolinium enhanced MRI, that is the gold standard investigation, and second most common, most important investigation in the case of acoustic neuroma is BERA, that is brain stem evoked response audiometry. उसमें क्या मिलेगा आपको? जो बहुत सारी waves होती हैं, 7 waves होती हैं, उसमें you will find the prolonged वेव 5th लेटेंसी, और फर्स्ट और 5th जो वेव्स होती हैं उसके बीच की लेटेंसी बढ़ जाएगी, और जो दोनों कान के बीच में जो वेव 5th होती हैं उनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा. यही है फीचर्स. सो द टू मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन यू विल एडवाइज इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ acoustic neuroma are first the gadolinium enhanced MRI and second is the BERA. Now the treatment first thing is the observation. भाई किन केसेस में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे? बिकॉज दिस इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर. सो इफ दिस acoustic neuroma is found in an elderly patient where there are contraindications for the surgery, and if it is a small tumor, so there you will follow up the case. Okay, then second the treatment of choice is surgery. It depends upon the size. आप कैसे कैसे एक्सेस करते हैं, it depends upon the size. तो हम उसे जो ट्यूमर को जो है किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो पहला जो अप्रोच हो सकती है दैट इज़ द मिडिल क्रेनियल फोसा, यानी कि यहाँ से ऊपर से. एज यू नो दिस इज द सेपरेट मिएटल क्रेस्ट. ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो आपका होता है मिडिल क्रेनियल फोसा होता है. तो आप यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा से आप अप्रोच करेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हियरिंग इज प्रिजर्व्ड इन द मिडिल क्रेनियल फोसा अप्रोच. सेकंड, ट्रांसलेबिरिंथाइन अप्रोच. ओके, ट्रांसलेबिरिंथाइन अप्रोच यानी कि लेबिरिंथ के थ्रू. सो ऑब्वियसली यू आर डिस्ट्रॉइंग द लेबिरिंथ, इन दैट केस द हियरिंग आपकी बिल्कुल चली जाएगी. सो सेकंड अप्रोच ट्रांसलेबिरिंथाइन. थर्ड, यू कंबाइन बोथ अप्रोचेस, मिडिल
sorry, third approach is the sub occipital approach, also known as the retrosigmoid approach. ये आपके पीछे की तरफ है, अब ये sigmoid है तो इसके पीछे की जो अप्रोच है retrosigmoid या sub-occipital approach कहलाती है. और फोर्थ जो है आप इन दोनों अप्रोच को मिला दीजिए, that is the combined translabyrinthine approach plus sub-occipital approach. So there are various approaches. Next line of treatment is the radiotherapy, that is the stereotactic radiotherapy. इसका example है that is gamma knife surgery. It is indicated in those cases where the patient is refusing the surgery or where there is a residual tumor after the previous treatment. So in those cases you will advise the gamma knife surgery. Now, what can be the differential diagnosis of unilateral SNHL where you are suspecting the acoustic neuroma? तो और क्या क्या differential diagnosis हो सकती हैं? तो second most common thing in the CP angle can be the meningioma. देन सेकंड न्यूरोमा हो सकता है, लेकिन वो सेवंथ नर्व का हो सकता है या और क्रेनियल नर्व्स का हो सकता है नियर द जुगुलर फोरामेन. थर्ड कॉमन कंडीशन कैन बी कंजेनाइटल कोलोस्टेटोमा एंड फोर्थ इज द अरेक्नोइड सिस्ट. सो दीज फोर क्लिनिकल एंटिटीज आल्सो प्रेजेंट विद द यूनिलेटरल SNHL. तो इस वजह से ये दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द अकाउस्टिक न्यूरोमा.